Welcome back, students. We will be discussing our tutorial number 6. In our tutorial number 6, our first question is like if your velocity potential function phi is given as x times 2y minus 1, you need to determine the velocity at 3, comma 4. You are given a point at which you need to determine the velocity, and that point is 3, comma 4. First of all, our velocity potential function that we have defined, it is defined in such a way that the negative derivative of this velocity potential function in any direction will going to give you the velocity of flow. So for suppose you need to determine the velocity component in x direction, that is u. So take the negative derivative of del phi by del x with respect to x. So this will be equal to the velocity component in x direction, that is u. डिफरेंशिएट कर दीजिए फाई फंक्शन जो दिया हुआ है डेल बाय नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ फंक्शन इज गिवन एज एक्स into 2y minus 1. So this del phi by del x minus del phi by del x can be written as u, and u is equals to, it is minus times of 2y minus 1, which can be written as u is equals to 1 minus 2y. So this is your velocity component in x direction. Similarly, if you need to determine the velocity component in y direction, simply differentiate this phi with respect to y. So minus del phi by del y will going to give you the velocity component in y direction, that is v. So minus del phi by del y is equals to minus del by del y of x into 2y minus 1. So from here you will going to get v is equals to, it is minus times of 2x. This is the velocity component in y direction. So your total velocity vector v, your total velocity vector v can be written as u times I cap plus v times j cap. u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ से. So your velocity vector comes out to be, velocity vector v comes out to be 1 minus 2y times of I cap plus, sorry, minus 2x times of j cap. This is your total velocity vector v. अब आपको एक पॉइंट दिया हुआ था जहां पे यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल वेलोसिटी ऑफ फ्लो. सो दैट पॉइंट इज 3,4. सो at point 3,4 वेलोसिटी वेक्टर इज, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे. तो 1 minus 2 into 4 times of I cap minus 2 into 3 times of j cap. So velocity vector comes out to be, this is 8 minus 7 times of I cap and minus 6 times of j cap. This is your velocity vector at point 3,4. If you need to determine the magnitude of this velocity vector, it can be determined using magnitude of velocity vector is equals to root over minus 7 square plus minus 6 square. So this is root over 49 plus 36. So this velocity
magnitude comes out to be root over 85. So this is a very simple question just to develop your basics about velocity potential function, and from that velocity potential function how velocity components are calculated in different directions. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जहां हमने सिंपली del phi by del x and del phi by del y यूज करके u and v we have calculated. Moving on to our next question. Our next question says that if phi is given as xy into y minus x by 3 plus y square minus x square, then determine whether this flow is possible or not. You are given a function in phi and you need to determine whether flow is possible or not. Whenever such question comes, you need to satisfy your continuity equation. If your continuity equation holds good, if your continuity equation is satisfied, then that flow will going to exist. And while deriving the formula for continuity equation using this velocity potential function, we have concluded that if this phi satisfies the Laplace equation, if this phi satisfies the Laplace equation, which is delta square phi equals to 0, if this operator delta square phi comes out to be 0, then we can say that flow will going to exist and flow will be possible. And also continuity equation is satisfied. So in order to prove this delta square phi is equals to 0, you need to calculate two things, that is d2 square phi by dx square plus d2 square phi by dy square. This is delta square, this is delta square phi. Okay, step by step हम एक एक चीज कैलकुलेट कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट phi is equals to xy into y minus x divided by 3 whole divided by 3 plus y square minus x square. So first of all, determine the first derivative of phi with respect to x. So d phi by dx, d phi by dx, उसके पहले इसको जरा ब्रैकेट ओपन करके खोल लीजिए phi को. So your phi is x y square minus x square y, this divided by 3 plus y square minus x square. This is your function of phi. Next is del phi by del x, or I should say d2 d phi by dx, d phi by dx is equals to y square minus 2xy divided by 3 plus 0 minus 2x. Next, again differentiating with respect to x. So d2 phi by dx square is equals to 0 minus 2 by 3 y minus 2. तो यहाँ से आपको d2 phi by dx square की वैल्यू मिल गई. The value of d2 phi by dx square is equals to minus 2 by 3 of y minus 2.
This is the value of d2 phi by dx square, which is minus 2 by 3y minus 2. Similarly, calculate the value of d phi by dy. So d phi by dy is equals to 2xy minus x square whole divided by 3 plus 2y. Again differentiate it with respect to y. So d2 phi by dy square is equals to 2 by 3x. This is 0 and this is 2. So यहाँ से you will going to get d2 phi by dy square is equals to 2 by 3x plus 2. In order to check for the continuity of a flow, you need to add this. So delta square phi is simply d2 phi by dx square plus d2 phi by dy square. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए d2 phi by dx square and d2 phi by dy square की. So your delta square phi comes out to be minus 2 by 3y minus 2 plus 2 by 3x plus 2. So these two will going to cancel out. You will going to have value of delta square phi is equals to 2 by 3 of x minus y. So there is some value of phi delta square phi which is exactly not equal to 0. And whenever this delta square phi is not equal to 0, whenever delta square phi is not equal to 0, it means flow will not exist. ये जो आपको phi का फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग फ्लो विल नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट. ठीक, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था whether flow will going to exist or not. So in this question, since delta square phi is not equals to 0, therefore flow will not going to exist. ठीक, so this is all about your question number 2. Moving on with the third question. Third question is again very simple. You are given with stream function. The value of stream function psi is equals to 5x minus 6y. Show that velocity at any point does not depend upon the coordinates. So simply you need to calculate the velocity using this psi function. Now how to calculate the velocity using this psi function? So we know that del psi by del x is equals to v, and del psi by del y is equals to minus u. And this u and v are basically the velocity component. This is in y direction and this is in x direction. So if you write the velocity vector, your velocity vector v comes out to be u times I cap plus v times j cap. Okay. So first of all, calculate the value of these u and v. You are given the function psi is equals to, psi is given as 5x minus 6y. So your del psi by del x is equals to 5, and your del psi by del y comes out to be minus 6. So this 5 is basically v, and this minus 6 is minus u. So if you need to write
the velocity component, your velocity vector v comes out to be 6 times I cap plus 5 times j cap. Up in this velocity component, you need to see few things. First of all, irrespective of any coordinates, your velocity will not going to change because there is no dependent variable over here. There are no independent variables present over here. Therefore, irrespective of any coordinates, your velocity vector will remain same. यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि शो दैट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट्स. आप कोऑर्डिनेट्स कुछ भी चेंज कर लीजिए. अगर यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा होता u और v का with respect to x and y, then the velocity will going to change with respect to x and y. If suppose u कोई फंक्शन आता x और y में एंड v कोई फंक्शन आता x और y में, या फिर दोनों में से कोई एक फंक्शन आता x and y में, then with the changing values of x and y, the values of v and u will going to change. But here the values of v and u comes out to be constant. So irrespective of the value of x and y, your velocity component will not going to change. ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था. इट इज बेसिकली फॉर सिंपल कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट यूजिंग योर psi function. Next is moving on to the next question. So these are very basics question जो कि सिर्फ आपको किस तरीके से वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन थे सारे. नेक्स्ट इज you are given with a stream function and you need to calculate the rate of flow. Rate of flow हम जानते हैं, it is discharge. We need to calculate discharge across 2 points, point A at 3,0 and point B 0,2. तो हम जानते हैं कि our discharge Q is simply the difference between value of psi A minus psi B. The discharge between 2 points or rate of flow across 2 points is simply the difference of the value of stream function at A and stream function at B. So your stream function psi is given as your stream function psi is given as 2x square y plus x plus 1 into y square. So at point A, which is 3,0, the value of psi A is 2 into 3 square into 0 plus x is 3 plus 1 into 0. So your psi A comes out to be, ये term भी 0 हो गई and this term is also 0. So your psi A value comes out to be 0. Next, value of psi B at point B, which is 0,2, the value of psi B is equals to 2 into 0 square into 2 plus 0 plus 1 into 2 square. तो यहाँ से आपको psi B की वैल्यू मिल जाएगी. psi B comes out to be 4. यहाँ चेंज कर लीजिएगा थोड़ा. It is psi B minus psi A. This is psi B minus psi A. So in order to calculate discharge across AB,
Discharge across AB is given by psi B minus psi A, that is 4 minus 0. So your discharge Q comes out to be 4 units. ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था. होपफुली ये क्वेश्चन भी आपसे बन गया होगा. नेक्स्ट इज इन अ 2D पोटेंशियल फंक्शन फ्लो. एक 2D फ्लो गिवन है, वहां आपको पोटेंशियल फंक्शन फ्लो, द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई इज गिवन एज x into 2y minus 1. Determine the velocity at point 4, 5 and also determine the value of stream function psi at this point. अब यहाँ आपको phi given है, you are given with phi is equals to x into 2y minus 1. सबसे पहले आपको वेलोसिटी निकालना है इसमें, यू नीड टू डिटरमाइन द वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस पॉइंट में निकालना है, एट पॉइंट P whose coordinates are 4, 5. और ये निकालने के बाद में यू नीड टू डिटरमाइन स्ट्रीम फंक्शन psi, you need to determine stream function psi, और ये निकालने के बाद में इस स्ट्रीम फंक्शन की क्या वैल्यू है एट दिस पॉइंट P, यू नीड टू डिटरमाइन दैट. psi P भी आपको निकालना है. ठीक, तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजें को सॉल्व करेंगे. आप देखते चलेंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, जहां आपको एक वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, उससे आपको स्ट्रीम फंक्शन कैलकुलेट करना है, या फिर कभी आपको स्ट्रीम फंक्शन दिया होगा, उससे आपको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कैलकुलेट करना होगा. तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आर velocity potential function psi is given as x is equals to 2y minus 1, and we know that our velocity vector v is equals to u times I cap plus v times j cap. Also, by definition, we know that minus del psi by del x is equals to u, and minus del psi del phi by del y is equals to v. तो यहां से माइनस टाइम्स ऑफ del by del x of x into 2y minus 1, this is u, and also minus del by del y of x into 2y minus 1, this is v, small v. इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी. So this comes out to be del by del x, this comes out to be 1 minus 2y, this is u, and यहाँ पे minus 2x, this is v, small v, velocity component in y direction. तो यहाँ से आप v वेक्टर लिख लीजिए. योर v वेक्टर इज u टाइम्स I कैप प्लस v टाइम्स j कैप. u और v की वैल्यूज आपके सामने हैं, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. योर वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2y टाइम्स ऑफ I कैप माइनस 2x टाइम्स ऑफ j कैप. ठीक, अब you need to determine the velocity at point P whose coordinates are given as 4, 5. ये क्वेश्चन में आपको कंपोनेंट पॉइंट दिया हुआ है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स 4, 5 है. तो at point P whose coordinates are 4, 5, your velocity vector can be written as 1 minus 2 into 5 times of I cap minus 2 into 4 times of j cap.
So your velocity vector comes out to be, this is 10 minus 1, which comes out to be minus 9 times of I cap minus 8 times of j cap. Taking the modulus, this is your velocity vector. Taking the modulus of this velocity vector, so root over minus 9 का square plus minus 8 का square. So this root over 81 plus 64. So this comes out to be root over 145. So this is your velocity at point 4, 5. Up next is you need to determine the stream function using these velocity components. उसको डिटरमाइन करने के पहले मैं आपको कुछ रिकॉल कराना चाहता हूं. वी हैव सीन Cauchy-Riemann's equation Cauchy-Riemann's equations जहां पे वी हैव सीन माइनस del phi by del x is equals to u, and it is also equal to minus times of del psi by del y. ठीक, this is first equation. Second, minus del phi by del y is equals to v, which is simply equal to del psi by del x. So using Cauchy-Riemann's equation, we know these relations that ये जो आपके सामने लिखा हुआ है. अब हम यहाँ पे u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग साई फंक्शन ऑब्टेन करेंगे, स्ट्रीम फंक्शन साई को ऑब्टेन करेंगे. So we know that u is 1 minus 2y and v is minus 2x. एक एक करके u is 1 minus 2y, which is minus del psi by del y, and v is minus 2x, which is del psi by del x. ठीक, एक बार और चेक कर लेते हैं सही लिख रहे हैं हम कि नहीं. So velocity component u 1 minus 2y and v is minus 2x. ठीक, मूविंग ऑन. देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये जो डेल्टा ऑपरेटर है, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव. तो जब कभी भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे. ऑन इंटीग्रेटिंग, so your psi comes out to be minus y plus y square plus function of x. Here if only function of x would be present और आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आपको 1 minus 2y ही मिलेगा. क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y था, इसलिए यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा. यहाँ पे भी सेम, ऑन इंटीग्रेटिंग
ऑन इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो जो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से आपका साई आएगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अ फंक्शन ऑफ y। ठीक, तो आपको दो फंक्शन मिल गए साई के। आप भी सोचेंगे सर ये क्यों, कैसे, मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? तो फाइनल आंसर लिखने के लिए आपको इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना होगा। ऑन कंबाइनिंग अबव टू एक्सप्रेशंस, तो सबसे पहले इन दोनों एक्सप्रेशंस में जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको आप लिख दीजिए। चेक कीजिएगा कि कोई कुछ कॉमन दिख रहा है। तो अगर कुछ कॉमन दिखता है तो एक बार लिख देते हैं हम उसको, जैसे कि यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है तो जो भी टर्म्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं वो सारी यहाँ पे आप लिख देंगे एक एक करके। सो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये जितना ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जो यहाँ कांस्टेंट टर्म आया हुआ है दिस एफ ऑफ एक्स, ये हमको दूसरे वाले एक्सप्रेशन में मिल गया। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे जो कांस्टेंट है एफ ऑफ एक्स वो यहाँ पे हमको मिल गया, दिस इज अ प्योर फंक्शन ऑफ एक्स। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म थी एफ ऑफ वाई वो हमको यहाँ पे मिल गई माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर विच इज अ प्योर फंक्शन ऑफ वाई। तो इस तरीके से आप कंबाइन करके फाइनल वैल्यू ऑफ साई फंक्शन लिख देते हैं। So your psi function, stream function psi, comes out to be y square minus y plus x square। अब आपसे क्वेश्चन में एक चीज और उन्होंने बोला हुआ है कि यू नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रीम फंक्शन psi at point P which is whose coordinates are given as 4, 5। You need to determine the value of psi at this point। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए psi इस कोऑर्डिनेट को psi फंक्शन में, तो psi p comes out to be 25 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहां से आपको जो साइ पी मिले, सॉरी ये माइनस है, दिस इज माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो योर साइ पी कम्स आउट टू बी 25 minus 5 minus 16। So this psi p comes out to be 4 units, 4 units। ये आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, तो होपफुली कोई दिक्कत होगी नहीं। यहाँ तक चीजें क्लियर आपको। मूविंग ऑन विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिंपल है। द स्ट्रीम फंक्शन फॉर अ 2D फ्लो इज गिवन एज 2xy। कैलकुलेट द वेलोसिटी एट द पॉइंट P एंड फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन phi। अब आपको साइ दिया हुआ है, साइ इज गिवन एज 2xy। सबसे पहले आपको वेलोसिटी निकालना है एट पॉइंट P। सो आवर वेलोसिटी वेक्टर v can be written as u times I cap plus v times of j cap। So this u is equals to minus del psi by del y and v is del psi by del x। यहां से आप u कैलकुलेट कर लीजिए, u इज इक्वल्स टू माइनस del by del y of 2xy एंड यहां से v कैलकुलेट कर लीजिए, v इज इक्वल्स टू del by del x of 2xy। So from here
your u comes out to be minus 2x, u is minus 2x, and v is 2y. अब आपको वेलोसिटी किस पॉइंट पे निकालना है? If mentioned, you need to calculate velocity at point P. Its coordinates are 2, 3. So velocity vector लिख लीजिए, v vector is equals to minus 2x times of I cap plus 2y times of j cap. वेलोसिटी वेक्टर आ गया ये. पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दीजिए इस वेलोसिटी वेक्टर में. तो एट पॉइंट 2, 3 our velocity comes out to be at point 2, 3 velocity vector is equals to minus 4 times of I cap plus 6 times of j cap. This is our velocity at point 2, 3. So at point P, velocity Vp vector is minus 4i times plus 6j. Ab again you need to determine stream function. Sorry, velocity potential function. To determine velocity potential function, in order to determine velocity potential function, use Cauchy-Riemann's equation. Using Cauchy-Riemann's equation, that is minus del psi by del y is equals to u, which is equals to minus del phi by del x, and also plus del psi by del x is equals to v, which is also equals to minus del phi by del y. आपको u और v की वैल्यूज पता है. u is minus 2x and v is 2y. रख दीजिए. u is minus 2x is equals to minus del phi by del x and v is 2y. तो 2y is equals to minus del phi by del y. इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों को. ऑन इंटीग्रेटिंग, ध्यान रखिएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर रखा है. ऑन इंटीग्रेटिंग, this comes out to be y is equals to x square plus function of y. और यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग your phi comes out to be minus y square plus a function of x. फाइनल वैल्यू ऑफ phi निकालने के लिए, एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ phi निकालने के लिए, and in order to eliminate these constant functions f of y and f of x, आप इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर दीजिए. ऑन कंबाइनिंग, your phi comes out to be x square
माइनस वाई स्क्वायर। पहले फंक्शन से एक्स स्क्वायर लिया, दूसरे फंक्शन से माइनस वाई स्क्वायर लिया, और ये दोनों जैसे पहली टर्म में हम देख रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ वाई, वो हमको यहाँ मिल गया, एंड सेकेंड में हम देख रहे थे माइनस वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स, तो वो हमको यहाँ मिल गया एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से कंबाइन किया जाता है व्हेन यू नीड टू कैलकुलेट अ सिंगल फंक्शन फ्रॉम टू डिफरेंट पार्शियल इंटीग्रेशंस। तो इस तरीके से आपको कंबाइन लास्ट में करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, मूविंग ऑन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is also very simple. You are given with a velocity component in a two-dimensional flow field for an incompressible fluid flows. आपको u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, and you need to obtain an expression for stream function psi. So we know that सबसे पहले u को लिख लेते हैं. u is given as y cube by 3 plus 2x minus x square y, and v is given as xy square minus 2y minus x cube by 3. So these are the two different components of velocity given in this question. First is y cube by 3 plus 2x minus x square by 2, and second is xy square minus 2y minus x cube by 3. So in order to obtain this function psi, you go by definition. We know that minus del psi by del y is equals to u, and del psi by del x is equals to v. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दोनों फंक्शन की वैल्यूज, u और v की वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यू आर गोइंग टू हैव माइनस del psi by del y is equals to y cube by 3 plus 2x minus x square y, एंड यहाँ पे del psi by del x is equals to x y square minus 2y minus x cube by 3. याद रखिएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर है। अभी यहाँ आपको इस क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कंबाइन कैसे करते हैं, व्हाट ऑल कॉमन टर्म्स उनका हम क्या करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं उनका हम किस तरीके से सोल्यूशन निकालते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग here you have del by del y, तो इंटीग्रेट करने पे you will going to have psi is equals to minus y raised to the power 4 upon 12, 4 3s are 12, minus 2xy plus x square y square plus a function of x. ठीक, so this is on integrating this expression. On integrating the other expression, on integrating the other expression, that is this one, your phi psi comes out to be x square y square minus 2xy minus x raised to the power 4 upon 12 plus a function of y. क्योंकि here partial derivative is with respect to x, therefore a function of y will going to stand as a constant.
अब here we have two expressions of psi. How to combine two different expressions of psi to get the final result? On combining these two expressions in order to obtain the final result of psi, first आपको ये देखना है कि कौन सी terms common है. What all terms are common here that you need to see. तो सबसे पहले जो टर्म कॉमन है दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों कॉमन है. इन दोनों एक्सप्रेशन में ये टर्म कॉमन है. तो सबसे पहले आप ये टर्म लिख दीजिए एक बार, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. सेकेंड, देखिए कुछ और टर्म कॉमन है क्या? तो वी हैव वन मोर टर्म दैट इज माइनस टू एक्स वाई एंड माइनस टू एक्स वाई, ये भी कॉमन है. तो ये भी एक बार लिख दीजिए माइनस टू एक्स वाई. जो भी टर्म कॉमन है उनको सिर्फ एक बार ही लिखना है. और अब जो टर्म्स दोनों एक्सप्रेशन में बची हुई हैं बाकी की टर्म्स लिख दीजिए. दैट इज माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 12 एंड माइनस y raised to the power 4 upon 12. So this will be your final expression of psi stream function obtained from two different velocity components. ये जो आपने फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको मत लिख दीजिएगा. इसी को एलिमिनेट करने के लिए हम ये दो बार इंटीग्रेशन करके कंबाइन करते हैं. ये जो f ऑफ x और f ऑफ y ये हमको चाहिए होते हैं ना, इन्हीं को एलिमिनेट करने के लिए वी इंटीग्रेट ट्वाइस एंड कंबाइन टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ अ फंक्शन. ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा इसके बारे में. ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ साई फंक्शन which comes out to be x square y square minus 2xy minus x to the power 4 by 12 minus y raised to the power 4 by 12. So this is all about your this question. Moving on to our last question. Last question is again very simple. You have a two-dimensional incompressible fluid velocity components u and v. Show that the velocity potential function exists and determine its form and also determine the stream function. तो ये क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस के ही लिए था. आपको u दिया हुआ है, u is given as x minus 4y and v is given as minus y minus 4x. अब आपको वही एक्सप्रेशन यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिटरमाइन स्ट्रीम फंक्शन, to determine velocity potential function, that is phi. So we know that minus del phi by del x is equals to u and minus del phi by del y is equals to v. ठीक, रख दीजिए वैल्यूज u और v की. u is x minus 4y, so minus del phi by del x is x minus 4y and minus del phi by del y is equals to minus y minus 4x. इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों टर्म्स को, तो you are going to have two different expressions of phi, or then you need to combine those two expressions. So on integrating, your phi comes out to be minus x square by 2 plus 4xy plus a function of y
and here on integrating you will have phi is equals to y square by 2 plus 4xy plus a function of x, क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y था, इसलिए द कांस्टेंट विल कम्स आउट टू बी अ फंक्शन ऑफ x. अब यहाँ से if in order to obtain the final expression of your velocity potential function you need to combine the above two expressions, और above two expressions को combine करने के लिए you need to first find out all the terms that are common in these two expressions. तो देखेंगे आप इन दो टर्म्स में जो फर्स्ट चीज कॉमन है दैट इज 4xy. तो ऑन combining your phi comes out to be 4xy, दैट इज अ कॉमन टर्म, और उसके बाद जो भी टर्म बची हुई है उसको आप लिख दीजिए प्लस y स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 2. So this is your final expression of your velocity potential function. Next, you need to calculate the stream function. Next, you need to calculate the stream function. तो हम again by definition जाएंगे stream function की. स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग कैसे हमने बनाई थी उसके अकॉर्डिंग ही हम मूव करेंगे. तो वी नो दैट अ स्ट्रीम फंक्शन del psi by del y, sorry, minus del psi by del y is equals to u and del psi by del x is equals to v. u और v की वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए. आपको जो वेलोसिटी कंपोनेंट दिया है u and v सब्स्टिट्यूट हियर. सो माइनस del psi by del y is equals to x minus 4y, that is u, यही है x minus 4y, and v is del psi by del x, v is minus y minus 4x. ठीक, अगेन इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों को. ऑन इंटीग्रेटिंग on integrating your psi comes out to be minus xy plus 2y square plus a function of x. और यहाँ पे on integrating you will going to have another value of psi which comes out to be psi is equals to minus xy minus 2x square plus a function of y, क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट जो आएगा विल बी अ फंक्शन ऑफ y. ऑन कंबाइनिंग दीज टू एक्सप्रेशन on combining these two expression you will going to have a final expression of psi, that is जो कॉमन है सबसे पहले हम उनको लिख लेंगे. minus xy is common, minus xy is written, then nothing is common I suppose, so we'll write rest of the terms, that is plus 2y square minus 2x square.
So this will be a final expression of stream function from two different velocity components. ठीक, so hopefully all the questions are clear with you. So that will be all for the day. Thank you for listening very patiently. Thank you so much.